Let me know once my window is visible. You can see my screen, guys. Yes, sir. Provide routine. Yes, sir. Fine, great. Okay. So as I had mentioned, previously, that today what we'll be beginning is with basically Apex programming language. Okay. Now within Salesforce, so today's focus will just be for some of you जो पहली बारी कर रहे हैं, right? Those who have not for past experience with Salesforce, जिनको idea नहीं है इसका. So today's class will be kind of getting introduction for you guys to what is the programming language Apex here and how are we using it, where are we using it, कहाँ कहाँ पे वो काम आता है, right? ये हम आज खाली cover करेंगे so that I don't want anyone because some people here may not have any experience with programming before. So at any point, anything related to coding or anything आपको question है, please make sure आप तभी पूछें, ठीक है? Do not suppress your question. फिर क्या होगा, जैसे जैसे लेवल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा बाद में आपको क्लियर नहीं होगा. Okay, so just going forward, at any point आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ वो हो, you should ask me that question immediately. Okay, for anything related to this. Now, out of this, so अभी तक हमने जो किया था Salesforce में, all of this was basically we are using the tools which Salesforce has provided already. So these are out of the box tools. Okay, जो मतलब Salesforce ने बनाए हैं, आप इससे ऑटोमेशन बनाओ, आप इससे परमिशन करो, कंट्रोल करो, ये सब चीजें हमने देखा है, राइट? बट समटाइम्स कुछ सिनेरियोज ऐसे हो ही सकते हैं जो हमको नहीं कवर हो सकते. Something we want to build completely specific custom to ourselves. That is when we end up with the situation जब हमको कोड लिखने की जरूरत है. Ideally, the recommended approach should be that if you can do it with the standard tools, then do not do it with code. But अगर आप standard tools से in any case cover नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप code करें. Now within Salesforce, code आपका कहाँ कहाँ पे होता है? UI के अंदर हम कोड कर सकते हैं. That is something which is the Lightning Web Component और Aura Component जो था. अगर मुझे यहाँ पे इस स्क्रीन पे let's say I want to add something here, or rather ये केस के पेज पे I want to add something here. Okay, so in that case, that whole thing I'll have to do using some UI development. वो रहेगा हमारा LWC और Aura Component. लेकिन मुझे अगर डेटाबेस में रिकॉर्ड्स के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करना है, एक्चुअल जो डेटा स्टोर्ड है बैकएंड में, वहां पे कुछ ऑटोमेशन बनाना है. हमने जैसे ऑटोमेशन में क्या किया था, लेट्स से हम गेट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, राइट? सेम चीजें मुझे कोड में कर रही है. सो देन आई नीड अ बैकएंड सर्विस. ओके, जो मेरा कोड फ्रंट एंड पे ना चले, यूआई पे ना चले, बट समथिंग जस्ट जो बैकएंड में डेटाबेस के साथ काम कर सके. दैट इज व्हाट बेसिकली एपेक्स इज. इट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका सेल्सफोर्स में बैकएंड के साथ डेटाबेस में काम कर सकता है. अब अगर वो बैकएंड में काम कर सकता है, सो व्हाट आर द यूज केसेस जहां जहां पे एपेक्स यूज होगा? देयर आर टू मेजर यूज केसेस जहां जहां पे आपका एपेक्स यूज है. वन इज अगर हमको कोई ऑटोमेशन वगैरह बनाना है किसी रिकॉर्ड, सो दैट इज वन स्पेसिफिक यूज. So that is covered by something called Apex trigger. It is a specific one. And the other part is just called Apex classes. यहाँ पे आप normal अपने according custom code लिख सकते हैं. Till now, any query, any question? Sir, can you repeat what are the Apex triggers and Apex classes once more? Right. So backend के अंदर if you think about कि हमारे पास दो major use cases होंगे. Backend में हम जब कोड लिखेंगे, कोड कब चलेगा? ठीक है, either whenever we want some custom condition वहां पे कोड चले, राइट? और जहां पे मतलब हम बोले कि ओके नाउ रन दिस कोड, देन इट विल रन बाय इटसेल्फ, इट विल नॉट रन. सो दैट इज वन स्पेसिफिक केस कि आप जितना मर्जी कोड लिख लो, फिर एज पर योर नीड यू कैन एग्जीक्यूट दैट कोड. एंड द अदर कोड विल बी जो जैसे हम जो ये यूज केस देख रहे थे, जो सब हमको ऑटोमेशन बनाने हैं, ये सब बनाने हैं, राइट?
So code that needs to run automatically whenever a object or data is modified. Right? These are the two major use cases. So code that runs automatically when data is modified, that is called a trigger, apex trigger. Name से ही आपको समझना है. Apex code which is triggered whenever data is modified. That is apex trigger. And all the other code we write as normal apex classes. Okay, that is the main difference. Now where do you find code here? Setup के अंदर आप जाएंगे. Just you need to write apex and you will see within custom code you can see apex classes, apex setting, test execution, test history and triggers. Settings, test execution, test history हम बाद में देखेंगे. For now, the two categories. First is apex trigger and second is apex classes. Okay. Now, right now, my code has no apex trigger. And I have three things. Just nothing too much here. Right. अब यहाँ पे जो हमने बोला, यहाँ पे from here you can also go, you can go to a class. Okay, आप apex class में गए, see it's a blank. Okay, you can edit this class also. Right. And अब यहाँ पे आपको कुछ कोड वगैरह लिखना है, you can type it out. But the only issue is this is more like a text editor. ठीक है. We do not want this thing. We want a dedicated IDE जहाँ पे as per our need हम code run कर सके, code check कर सके, code correct है कि नहीं, right? All those tools you want. Now, obviously there is also an IDE which we'll cover later. जो हम बाद में करेंगे. We have to set it up. IDE कैसे set up करना है, कैसे check करना है, वो हम देखेंगे. But for now, the most fundamental way to write code in Salesforce. Salesforce is a cloud implementation, right? ये cloud पे stored implementation है. What does that mean? Anything within this you should be able to do from browser. Ideally, right? Cloud का मतलब क्या है? You actually don't need local things, right? अभी तक हमने Salesforce में जो भी सीखा है, आपके पास ब्राउजर है, इंटरनेट कनेक्शन है, आप पूरा काम कर सकते हो. Same thing also happens with code, except for one. मतलब एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ के. So अब एपेक्स क्लास में मतलब हमको कुछ डेडिकेटेड टूल उन्होंने दिया है सेल्सफोर्स ने, वेयर यू कुड डू इट. एंड फॉर लॉन्ग लाइक फॉर मल्टीपल इयर्स इनिशियली से पहले यही पे कोड करते थे, राइट? एंड दैट इज यहाँ पे सेटअप के अंदर ये जो हम देख रहे थे, विच इज द डेवलपर कंसोल. अब आप डेवलपर कंसोल के अंदर से यू कैन क्रिएट एन एपेक्स क्लास ऑल्सो, यू कैन क्रिएट एन एपेक्स ट्रिगर ऑल्सो. ओके, तो आप ये दोनों एपेक्स के जो टाइप्स है आप यहाँ से आप बना सकते हैं. एग्जिस्टिंग कोई क्लास है, आप उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? एग्जिस्टिंग क्लास को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं. एंड कोई भी चेंज करना है आपको, जो जितना है यहाँ पे आपको हो जाए. दिस इज द पर्पस ऑफ डेवलपर. अब what we say is okay, it is a dedicated tool, then there is some additional functionality जहाँ पे मिलना चाहिए, तो वहाँ पे हमारे पास था नहीं, right? And you do get those functionalities. Is someone else join? Oh, no. So what are the other functionalities you get within developer console? Within edit, you can just modify files and all those things, right? One crucial thing you have to remember, which is inside this debug. ठीक है? Debug के अंदर आपका क्या है? If you see this first option, which is called Open Execute Anonymous Window. What this means, sometimes I am writing code and I want to check something before I actually put it in the class.
कि ये कोड एक बार रन करके देखते नहीं चलता है कि नहीं, क्या है इसका रिजल्ट होता है, राइट? यू मे वांट टू डू दैट, और देयर मे बी अ सिचुएशन जहाँ पे आपके पास कुछ कोड है जो आपको वन टाइम चलाना है खाली। सो दिस डिबग ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस, यहाँ पे आप वही कोड लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस इज समथिंग विच ओवर टाइम वंस यू गेट मोर कंफर्टेबल you will yourself see, you will start using this mode. Okay, now it test and all we will cover later because there is a whole test class logic we have to cover, तो उसमें हम बात करेंगे what is the expectation there, what you are supposed to do. Till now any question? Anyone? No, sir. No? Great, fine. Now within Apex class, what are the things you have to remember? जब भी आप कोई एपेक्स बना रहे हैं, कभी आप एपेक्स का कोड लिख रहे हैं, सो यू हैव टू राइट इट इन अ क्लास, इन एन एपेक्स क्लास. So what does that mean, an Apex class? That is nothing but just a container of code. ठीक है, आपको कोई कोड किसी कंटेनर के अंदर रखना है ताकि वो कोड कहीं और से आप ढूंढ के रन कर सकें. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ क्लास. आपने के पास 5 लाइन का कोड है जो आप चाहते हैं कि चले, ठीक है, और ये कहीं पे यूआई वगैरह से कॉल करना है. तो कैसे पता चलेगा यूआई को कि ये 5 लाइन कहाँ लिखी है, कहाँ से रन करना है? So that is why you create a container for that code, which is called the class. Now, अब क्लास जब आप बना रहे हैं तो द सिंटैक्स एज यू कैन सी हियर इज प्रिटी नॉर्मल. पब्लिक क्लास डेमो क्लास. दिस नेम एंड दिस नेम विल बी सेम. ओके, जो पब्लिक क्लास है किसी भी एक फाइल के अंदर, उसका नेम विल बी द सेम एज द फाइल नेम. ओके, एंड दिस कीवर्ड क्लास इज रिक्वायर्ड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि पता चलना चाहिए क्या क्लास है. अब यहाँ पे इसके अंदर anyone has any idea what this is? Function access modifier. Right. So what do you think? Can you elaborate the purpose of this? Not someone who knows, someone who does not know. ये public, just एक public word लिखा है, ये देख के आप क्या लग रहा है, क्या हो? What should be the use case? क्यों हो सकता है कुछ? Anyone? The public is used for the purposes like, for example, we have a team in our company. पब्लिक क्लास बनाते हैं तो पब्लिक क्लास को दूसरे भी यूज कर सकते हैं, इसलिए I'm not wrong. Exactly right. Exactly. So you will see over time. देखो, code at one point of time, code was written in almost completely नॉन सिंटैक्टिकल लैंग्वेजेस में पहले कोड लिखा जाता था, जब कोबोल वगैरह ये सब लिखते थे, राइट? सो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वीबी अगर आपने सीखने किया होगा तो ये सब दैट वाज नॉट सपोज टू बी ह्यूमन रीडेबल कोड. ओके, बट नाउ कोड हैज बिकम वेरी ह्यूमन रीडेबल कोड. तो इसीलिए दे हैव मेड श्योर की टर्म्स जो हैं, की वर्ड्स जो हैं, नाम देख के ही समवन कैन गेट एन आइडिया व्हाट इट इज, और एक बार पढ़ लिया तो फिर तो पता चल ही जाएगा, राइट, व्हाट इट इज. नाउ इन दिस केस public means, as I think Udit had mentioned, that this specific term is called access modifier. Okay, what does that access modifier means? Who all can access the code within this class? Okay. Now, अब इसके अंदर public by default यहाँ पे आ गया है, but this is not the only one there is. There are basically 4 access modifiers by keyword, I would say. Actually, not 4. हाँ, 4 मतलब. Right. So actually there are 5. Actually there are 6. But most commonly जो access modifier consider करे जाते हैं, those are 4. One is, this is public.
ओके, जो आप किसी भी और क्लास से कॉल कर सकते हैं। दूसरा है प्राइवेट, नो वन कैन कॉल इट बिकॉज इट इज हिडन। तो प्राइवेट क्लास का क्या पर्पस होगा? प्राइवेट क्लास का देर आर ओनली वन टू स्पेसिफिक पर्पसेस जहाँ पे आप प्राइवेट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली यू वांट योर कोड कहीं से कॉल हो सके। इन मोस्ट केसेस यू विल फाइंड इट टू बी पब्लिक, और देयर इज अनदर वन विच इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड और पब्लिक में थोड़ा आपका डिफरेंस है। प्रोटेक्टेड और पब्लिक में डिफरेंस है विजिबिलिटी का, विद इन स्कोप। ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन? Public means this is can be called from anywhere. Okay, but protected means ये यहाँ पे इस क्लास के अंदर there is something called hierarchy. So within the hierarchy it can be called. Okay, so private means suppose there are multiple classes. Okay. Private by itself means it is unique. वो उसको कोई कॉल नहीं कर सकता. It is not even visible to others. Protected means in sometimes there is a hierarchy within classes. तो वहां पे protected becomes more applicable. Public means obviously directly हमको दिख रहा है, and there is another one which is called global. Okay, now global का जो specific use case है वो मैं आपको explain करने के लिए I'll give you an example. Suppose अभी इस org में, मेरे org में कितनी एपेक्स क्लासेस थी हमने देखी? 3 एपेक्स क्लासेस हैं, राइट? ना स्क्रीन इज विजिबल, राइट? Yes. Yes, sir. राइट। सो अब यहाँ पे इशू क्या होता है? इफ यू सी देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दीज क्लासेस। दिस डेमो क्लास डज नॉट हैव अ नेम स्पेस प्रीफिक्स। इन दोनों क्लास के पास आप देखेंगे नेम स्पेस प्रीफिक्स में वैल्यू है। व्हाट डज दिस मीन? विद इन सेल्सफोर्स जैसे हम खुद से तो बना ही रहे हैं, राइट? बट सिंस as I mentioned, right, the cloud के अंदर you can add functionalities also directly, which means Salesforce give you a functionality where you can install already built code or implementation from somewhere else. Okay, I told you initially, right, app exchange से हम सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, ऑलरेडी रेडीमेड हम चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज दैट? इट इज लाइक, अगर think of this as like this, Salesforce org is your computer, राइट? तो उसका जो फंक्शनैलिटी आपके पास है वो तो है, उसके साथ आप एडेड फंक्शनैलिटी के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, यस और नो? Yes. राइट। सो इन दिस केस पब्लिक का विजिबिलिटी बाय इटसेल्फ इज लाइक विद इन दैट सॉफ्टवेयर, विच वुड मीन यहाँ पे अगर आप देखें ये एक पैकेज इंस्टॉल्ड है मेरे हिसाब में, जो है सेल्सफोर्स कनेक्टेड ऐप, स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स का एक पैकेज। दिस इज अनदर पैकेज जो मैंने ट्रेलहेड से इंस्टॉल किया। Now within this what that means, visibility का अगर हम एक्चुअल स्कोप खाली देखें, since these two classes fall in the same namespace prefix, तो अगर ये क्लास पब्लिक है, let's take this TT util controller is a public class. What that means, this util controller test can see this code, but demo class cannot see this code, which means public by default does not means visible to everyone. It means visible to everyone within the namespace. और सेम नेम स्पेस के जो रहेंगे उसमें सबको विजिबल रहेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि अक्रॉस नेम स्पेस भी विजिबल हो,
In that case, the fourth access modifier is global. Okay. So you have private, protected, public and global. Every level पे access बढ़ता जा रहा है, visibility बढ़ता जा रहा है. Private has the least, global has the most. When people talk about access modifiers, ये चार normally people say these are the four ones. But technically there are two others. Okay. One access modifier is web service. Okay. This is अभी तो जैसे ज्यादातर API REST API होता है, but at one point SOAP API was dominating. Okay. So SOAP API के लिए जब expose करते हैं तो एक ऐसा ही public की जगह it would have been web service. Okay, this is also an access modifier which still works. Okay, if you want to build an API, you can use it. Not all people remember, or sometimes people know but can't recall. Okay, and the third one, which is actually an annotation, but people also consider it an access modifier because access modifier का purpose है code को visible करना कहीं पे, right? So there is an annotation at the rate aura enable. This annotation makes your code visible to the UI. तो अगर आप @Aura enable लिखेंगे तो ही आपका कोड UI से कॉल होगा. ओके, नाउ इफ यू सी हियर, मैंने यहाँ पे जैसे लिखा, मेरे पास एक एरर आ गया. क्यों एरर आया? बोल रहा है Aura enable is not allowed on classes. That means not all access modifiers are allowed on classes. Till now ये क्लास का और क्लास के एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट एवरीवन हैज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड. अब क्लास के अंदर I cannot just start writing code, anywhere, like, just to debug something. मैं डायरेक्ट ऐसे कोड लिखूंगा तो there is a problem, which is this. ये मैंने एक लाइन लिखी. So this system.debug basically prints data, okay, in the log. तो मैंने ये लाइन लिखी. अब this by itself is useless क्योंकि मैं इसको as per my need whenever I want I cannot call this. Okay, what if I wanted to do some custom logic जहाँ पे कुछ input भी आता है, right? So डायरेक्टली आप कोड नहीं लिखेंगे. What you will do in most cases is, अब कोड आपको कहीं से कॉल करना है, which would mean एक class. For every functionality you would not create a class. Okay, what you would do is a similar group of functionality you will keep inside a single class. So that is when the next part becomes more important, which is a method. Okay. Method. अब मेथड के लिए भी अगेन एक्सेस मॉडिफायर आपको देना पड़ेगा. तो ऑरा एनेबल्ड मेथड पे दे सकते हो, क्लास पे नहीं दे सकते. ओके, आपने एक एक्सेस मॉडिफायर दिया. लेट्स राइट अ मेथड टेस्ट मेथड, राइट? नाउ ये मैंने जो मेथड लिखा है, this is completely incorrect as of now, or rather I would say incomplete as of now. Why? जब भी आप कोड, ओके लेट्स टेक, जब हम ऑटोमेशन बना रहे थे, विल टेक एन एग्जांपल. ओके, हमने फ्लो बनाया था कि हमारा केस रिकॉर्ड अपडेट होगा, हम ईमेल भेजेंगे, कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा, हम ईमेल भेजेंगे. वी हैड क्रिएटेड दैट फ्लो और नॉट? वी हैड ऑटोमेटेड दैट फ्लो, राइट? सो इन दैट फ्लो something was coming as input and something was going as out. Which one was what? Can anyone say? Sir, which one is what? मतलब
क्या इनपुट आ रहा था वहां पे और क्या आउटपुट जा रहा था वहां पे, जब हमने फ्लो बनाया था। कॉन्टेक्ट क्रिएट हो रहा था और वो इनपुट था और आउटपुट था ईमेल। email, right? So in normally in most cases you will end up with code जहाँ पे आप कुछ उस कोड को भेजेंगे जिसके ऊपर वो कोड काम करेगा, एंड देन वो कोड काम करने के बाद आपको एक एंड रिजल्ट रिटर्न करेगा, राइट? सो दैट वहीं से हमारा एक मेथड का जो एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है वो क्रिएट होता है, विच इज एक्सेस मॉडिफायर, और मेथड नेम तो आपने लिखा, उसके बीच में आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप। दिस इज जस्ट अ प्लेस होल्डर, रिटर्न टाइप आपको लिखना पड़ेगा, एंड आपको इनपुट्स जो भी हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, दिस वुड बी अ स्टैंडर्ड मेथड लिखने का स्ट्रक्चर। नाउ वी विल delve into what do I mean when I say return time. Okay, so अब कोड के अंदर you have to remember, जब हम फील्ड बना रहे थे, फील्ड का हम टाइप सिलेक्ट कर रहे थे, what were all the types which were available to us? Can anyone text, tell me 5 types? text, number, email, no, this one, what is the mobile, a formula, Mhm. and and email, Sorry? email. Email. Good. Fine. So दैट सेम केस, हम वहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा का कुछ तो टाइप होगा। सिमिलरली कोड में भी अगर आप, मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिटर्न टाइप कि ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, तो जो भी रिटर्न कर रहा है उसका कुछ तो डेटा होगा, राइट? आइदर इट इज से रिटर्निंग माय नेम, राइट, और इट इज रिटर्निंग से मैसेज सक्सेस हुआ है, राइट, सक्सेस हुआ है, या फिर कोई और मैसेज भेज रहा है कि एरर हुआ है, राइट? या फिर लेट्स से एज यू मेंशन 1 2 3 4 5 नंबर भेज सकता है, मे बी कुछ स्पेसिफिक नंबर भेज सकता है, राइट? और क्या भेज सकते हैं? ट्रू फॉल्स भेज सकते हैं। ट्रू फॉल्स इट कैन सेंड अ डेट, इट कैन श्योरली सेंड अ डेट। तो व्हाट डज दैट मीन? कोई भी हमारा डेटा होगा, डेटा हम डायरेक्टली तो रख नहीं सकते, हमको कुछ डेटा का टाइप तो हमको पता होना चाहिए, राइट, कि वो क्या हो रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाई whenever you want to store data inside code, we have to create a variable. Okay, I am adding these. Can you guys see this? ये जो मैंने डबल अपोस्ट्रोफिस, सॉरी, बैक स्लैशेस डाले हैं, हाँ सर। राइट? तो ये डबल बैक स्लैशेस आर एक्चुअली यूज्ड फॉर कमेंटिंग। ओके, ये मैंने जैसे डबल बैक स्लैश डाले ये कलर चेंज होता है। व्हाट डज दिस मीन? दिस इज नाउ जस्ट अ कमेंट, यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये खाली हेल्प के लिए है। व्हाई वी यूज दिस पर्पस लाइक दिस, राइट? दिस मेथड इज फॉर displaying how methods work with it, राइट? सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस मेथड के ऊपर मैंने कुछ एक इंफॉर्मेशन डाली फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस मेथड डज। सो सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड इन द कोड, जिससे जो कोड पढ़ रहा है उसको पता चले कि अच्छा ये कोड क्या करना चाह रहा है, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड। सो दैट इज कॉल्ड अ कमेंट, एंड टू ऐड कमेंट्स वी यूज दिस डबल बैक स्लैश। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, जब भी मेरे को कहीं पे डेटा स्टोर करना है तो उसका कुछ टाइप मेरे को कोड को बताना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ नंबर है, राइट? सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज वी क्रिएट वेरिएबल्स। ओके,
Anyone has heard of the term variables? Or are there people who are hearing the term variable for the first time? चलो, सबको पता, then it's good. Then it's good. Fine. तो अब as I told you, right, मेरे को ये नंबर कहीं पे स्टोर करना है. So that's why we have all these data types in Apex integer. Okay. नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ. For right now, I will be writing this just var1. Ideally, always remember variable का नाम has to be proper. ये var1 वगैरह बैठ के ऐसे अपने ही लिख सकते. वेरिएबल कहाँ पे यूज होगा, कैसे होगा, उसके बेसिस पे नाम लिखना है, तो वो हम बाद में लिखेंगे. ओके, बट फॉर नाउ इंटीजर var1 is equal to 1 2 3 4. ओके, तो ये एक वेरिएबल बना है, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, एंड वैल्यू मैंने असाइन की नंबर. राइट, नाउ इंटीजर है मतलब इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, डेसिमल नहीं हो सकता. It has to be positive, it can be negative, but it has to be a complete number. What if I write here 1 2 3 4 5? अभी तो यहीं पे फेल. ओके, अभी तो इसी की वजह से फेल. बट एनीवेज, बाद में इसकी वजह से क्या होगा, इवन दो यू राइट दिस, इट विल कन्वर्ट इट. तो बोलेगा इंटीजर मतलब ओनली दिस मच. ओके, सो दिस इज अब इंटीजर डेटा टाइप हो गया. देन वी हैव नंबर के अंदर ही देयर आर बेसिकली 4. इंटीजर आपने देखा, डबल इज देयर, एंड देन देयर इज अ डेसिमल. डबल इज बेसिकली डेसिमल ओनली, बट इट्स लाइक कितना डीप तक जा सकते हैं, राइट. दैट इज ऑल, मतलब लेंथ कितना ज्यादा है, दैट इज योर डबल एंड डेसिमल में डिफरेंस. तो डेसिमल में पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा तक जा सकते हो, डबल में उतना नहीं जा सकते, बट रादर यहाँ पे रेंज बढ़ जाता है. एंड देन वी हैव अनदर टाइप इज लॉन्ग. लॉन्ग का रेंज इज और भी बहुत ज्यादा. ओके, तो लॉन्ग where to I can go to this. You have taken as a number, and it will be even bigger than this. Okay. So for very huge number, normal cases, double should be fine. Double it's to 1 2 3 4. Other than this, what we have, true false मैंने आपको बोला था, तो उसके लिए डेटा टाइप होता है बूलियन. बूलियन का वैल्यू हो सकता है आइदर ट्रू या फिर फॉल्स. दैट्स ऑल. देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा एक्चुअली यूज होगा अल्टीमेटली, इज टेक्स्ट. टेक्स्ट जब आपको स्टोर करना है, तो टेक्स्ट के लिए जो वेरिएबल है, दैट डेटा टाइप इज कॉल्ड स्ट्रिंग. एंड how you write string, so it becomes a string. Okay, other than string, or data type हमारे पास, we have, Your voice is not clear. I can keep it as new date also, right. डेट हमारे पास हो गया, डेट टाइम भी है हमारे पास, कि हमारे पास डेट भी हो एंड आवर्स आल्सो हैव टू मेंटेन. देन ये तो हमारे पास डेटा के टाइप्स हो गए, एंड द वन मेन डेटा टाइप व्हिच वी आल्सो हैव इज आईडी. सेल्सफोर्स के रिकॉर्ड्स का आईडी का हमको जरूरत पड़ सकता है, राइट. सो वी आल्सो हैव आईडी एज अ डेटा टाइप. नाउ वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हम ऐसे डेटा टाइप देके वेरिएबल बनाएंगे. तो हर एक मेथड, राइट,
will ideally return some output. It will return some output. Let's say in this case, it returns my name. So the last line will be return var. तो ये मेथड क्या रिटर्न कर देगा, ये मेरा नाम रिटर्न कर देगा. अब in this case, what should be the return type? अगर ये मेथड var रिटर्न कर रहा है, so what is it actually returning? कौन सा डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है? String. String. Text. So then this method's return type becomes what? String. String. So आपका return type will be कि क्या आउटपुट आ रहा है उसका डेटा टाइप आप बताओ. Same thing also applies to input. इनपुट में आप क्या कुछ भी, आप इनपुट में इंटीजर ले सकते हो, ठीक है, आप डबल ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले लो. Right? So input you can have any data type and you can have multiple inputs, but output का data type will be only one. Is this clear? Yes. Yes, sir. Right? So class उसके अंदर हमारा मेथड, कोड के अंदर हम डेटा स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली विल बी क्रिएटिंग वेरिएबल्स एंड ऑल. तो वेरिएबल का हमको डेटा टाइप बताना पड़ता है कि इसके अंदर हम किस टाइप का डेटा रखेंगे. Then that can be our input, that can be our output. Sometimes जैसे सपोज हमने जो ऑटोमेशन बनाया था, जो अपॉर्चुनिटी पे एक फील्ड अपडेट कर रहा था, नहीं सॉरी, अपॉर्चुनिटी के क्रिएट पे एक अकाउंट अपडेट करना था, राइट. सो इन दैट केस अगर वही चीज मैं कोड में बनाता, क्या होता मेरा, अपॉर्चुनिटी इनपुट आता, अकाउंट अपडेट हो जाता, काम खत्म. यहां से कुछ रिटर्न करने की जरूरत है? No. नो राइट, क्योंकि मेरा जो फंक्शनैलिटी था वो मेथड के अंदर ही खत्म हो गया. अब मुझे वापस खींच के कुछ और करना नहीं है. दिस इज वेयर द कोड एंड्स. ऐसे यूज केसेस हो सकते हैं. So you will not always need to return something. That is also valid case. कि यहाँ पे आया, कोड एग्जीक्यूट हुआ, काम खत्म, nothing else to do. In that case only एक और हमारे पास रिटर्न टाइप होता है which is called void. void अगर दिया है मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता. ये मेथड कॉल होगा, काम खत्म करेगा, डन, वापस चले जाओ, अगला मेथड चलो. यहाँ से कुछ आउटपुट नहीं आएगा. इसको जो काम करना था कोड एग्जीक्यूट हो गया, दैट इज. So that is why you have this void. So till now, class, access modifier, method, method का structure, what is a variable, what are data types. Anyone has any questions with these things till now? सर ये वेरिएबल आके एक वैल्यू स्टोर करता है ना सर, आई मीन एनी टाइप ऑफ वैल्यू. Exactly. Any type of value can store. कोड में सपोज मुझे दो एक एडिशन करना है, कोड में सिंपल एक एडिशन करना है, तो मेरे को एडिशन करने के लिए दो नंबर तो पहले चाहिए, राइट? चाहिए कि नहीं? तो मेरे जी पास सर. ये दो वेरिएबल अगर होंगे तो ही तो मैं इनका सम कर पाऊंगा. अब अगर मैं सम जब कर रहा हूं तो वो भी तो एक इंटीजर ही होगा, तो वो भी कहीं पे स्टोर करना है मुझे, राइट? तो var 7 is equals to what? var 1 प्लस var 6. तो कोड तो ऐसे ही चलेगा, राइट? जो लॉजिक आपको करना है
तो आपको लॉजिक करने के लिए डेटा को कहीं पे स्टोर करेंगे, उसके बाद ही उसको लॉजिक करेंगे, राइट? तो दैट इज व्हाट अ वेरिएबल इज, एंड बेस्ड ऑन कौन से टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा टाइप स्टोर। Got it. ओके, Sir, can you explain input parameter again? input parameter. Okay, let me modify this method to something which returns an integer. Okay, and let me add two input parameters, input 1 integer, input 2, and what I want to do is return, rather एक साथ में लिखें, let's you get comfortable with, then I'll write integer output is equals to input 1 plus input 2, right? And I write return output. तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास दो नंबर आए एज एन इनपुट, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया, उन दोनों को सम करके वो एक वेरिएबल में स्टोर किया, फिर वो मैंने आउटपुट में भेज दिया। तो ये मेथड का लॉजिक काम करने के लिए मेरे को ये दो चीजें तो चाहिए थी, राइट? सो दीज नीड टू बी सेंट फ्रॉम आउटसाइड द मेथड, एंड फ्रॉम आउटसाइड द मेथड अगर आ रहे हैं मतलब ये क्या हुए, ये है मेरे इनपुट पैरामीटर। ओके, Okay, sir. Got it. राइट। नाउ अब ये जो मैंने डेटा टाइप्स आपको बोले थे ये तो हमारे थे बेसिक, जिनको बोला जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, वेरी सिंपल Sir, स्ट्रक्चर, नथिंग मच टू छोटी आपने डेट वेरिएबल बनाया था, डेट आई डोंट नो विच स्पेसिफिक डेटा टाइप इट वाज, एंड आपने उसमें वैल्यू पास करा था न्यू डेट। डू, राइट? वो इफ यू कुड जस्ट एक्सप्लेन दैट। No, I'm about to explain that. Hold on. राइट। Right. So, if you will notice something here, ये जितने मैंने डेटा टाइप्स बोले, ओके, इफ यू सी फॉर ऑल ऑफ दोस डेटा टाइप्स जब मैं लिख रहा हूँ द फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटल, ओके, दिस इंटीजर, राइट, डेट, स्ट्रिंग, डबल, डेसिमल, इन सब के लिए मैंने कैपिटल में लिखा था। व्हाई कैपिटल में लिखा था? इट इज नॉट जस्ट अ डिजाइन चॉइस, बिकॉज फॉर ऑल ऑफ these डेटा टाइप्स Salesforce has its own classes also. तो Salesforce की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जैसे हमारी एक की क्लास है डेमो क्लास, वैसे ही इंटीजर नाम की एक क्लास भी है, उसके अंदर मेथड्स भी हैं। ओके, जो मेथड्स दैट दे फील आर एप्लीकेबल टुवर्ड्स इंटीजर डेटा टाइप वो उस मेथड्स उसके अंदर हैं। आप एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप से आप कन्वर्ट कर सको उसके लिए भी मेथड्स हैं। नाउ बट दीज आर योर मोर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब यहाँ पे जैसे मैंने जस्ट नॉर्मल बनाया है, अगर मैं करता हूँ इंटीजर आउटपुट 2 इज इक्वल्स टू 1 2 3 6, व्हाट दिस मीन्स, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेल्सफोर्स में जब हम क्लास बना रहे हैं, एक तो हमारा है व्हाट वी कॉल समथिंग एज एन ऑब्जेक्ट, ओके, जो है हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो, बट इन कोड देयर इज अनदर स्पेसिफिक टर्म which is called an object in code only. That object is what, वो है किसी भी एक क्लास का अगर आप कोई यूजेबल इंस्टेंस आप बनाते हैं तो उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। इन दिस केस ये जो आउटपुट 2 है, दिस इज फंडामेंटली एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इंटीजर क्लास, मतलब ये इस इंटीजर क्लास का एक इंस्टेंस है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की है 1 2 3 4।
The same thing I can also write as integer up to 3 is equals to new integer. Huh? Output 3 is equals to. So what does that mean? मैंने integer class का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट में मैंने वैल्यू डाली 1 2 3 4. अब बेसिक डेटा टाइप्स के लिए ये डायरेक्टली यहाँ से पुल कर देंगे. होल्ड ऑन सेकंड. Ping. Give me 1 second. Okay, I will ping him back. Right. So अब यहाँ पे हम अलग अलग क्लास के हम ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं. So that is all that I did with the data. Instead of directly setting a value, you can also create an object like that. अब where it will be more useful, I'll tell you. Integer तो मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं बस. Okay, if I write as string s1 is equals to test text value, right? तो मैंने डायरेक्टली ऐसे क्रिएट कर दिया, ऐसे भी हो गया. बट आप वेरिएबल खाली बेसिक डेटा टाइप्स के नहीं बना सकते. अगर आप खाली बेसिक डेटा टाइप्स के ही वेरिएबल बना सकते तो क्या आप कभी कोड में कॉम्प्लेक्स लॉजिक आप बिल्ड कर पाएंगे? सुनो, आपको अगर मैं यहाँ पे बोलूं कोड लिखिए आप ये अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट, तो आप कैसे लिखेंगे अगर आप खाली ये टेक्स्ट वगैरह ही बना सके तो? राइट. सो दैट इज व्हाई you can actually also create variables of all the Salesforce database objects, which means account. I can create a variable of type account. And what do I have to put inside this? New account and then round brackets. So what this means? Account object. ACC is an object of account class. Okay. तो ये account का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे. For all the objects you have in your system, you can do this. हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था, right? So you can do that same thing here. Is this clear? Yes, sir. सर Same जैसे आपने object. इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाया था और आपने उसमें वैल्यू पास करी थी एक इंटीजर टाइप, वो स्टेटमेंट जैसे इंट a इज इक्वल टू 1 और इंट a इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, फिर वो ब्रेसेस, देन a इज इक्वल टू 1, इसमें सर डिफरेंस क्या है? नहीं, वहां पर डिफरेंस नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ. बट उसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड आपको दे रखा है कि बेसिक डेटा टाइप के लिए आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, राइट? दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है जिसके लिए ऑलरेडी योर कोड इज ऑप्टिमाइज्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड टू हैंडल ऑल पॉसिबल सिनेरियोस. ओके, सो दैट इज दिस. अब यहाँ पे व्हाई दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? क्योंकि इंटीजर में आप क्या ही स्टोर कर सकते हो? नंबर के अलावा कुछ स्टोर कर सकते हो? नो. नो, राइट. सो इसीलिए अगर उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन करने दें तो दैट डज नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम.
इसीलिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आप डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हैं एंड यू आर ऑल्सो सपोज टू, आपको डायरेक्टली ही वैल्यू असाइन करना चाहिए। प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए आप वैसे न्यू स्ट्रिंग करके या न्यू इंटीजर न्यू डबल करके नहीं करेंगे आप। ओके, ओके सर। ओके सर। बट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स you will end up having to do like this. Why? एक अकाउंट के रिकॉर्ड में कितने टाइप की फील्ड्स थी? काफी ज्यादा, एटलीस्ट 15। 150 फील्ड्स थी, राइट? अकाउंट ऑब्जेक्ट पे एटलीस्ट 150 फील्ड्स तो होंगी, राइट? डमी में, स्टैंडर्ड में भी। देन एक इसमें डायरेक्ट अकाउंट एसी इक्वल्स टू, यहाँ पे आप नाम, कॉन्टैक्ट आईडी, मेलिंग एड्रेस, टाइप, अमाउंट, रेवेन्यू सब ऐड कर सकते हो? नहीं होगा, राइट? यू नीड सम फंक्शनैलिटी जहाँ पे आप एक एक करके सब फील्ड्स का वैल्यू सेट कर सकें। एंड दैट इज व्हाई फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स you have to do like this. Okay, is this clear? यस। बेसिक डेटा टाइप के लिए आप डायरेक्ट वेरिएबल बनाएंगे, वैल्यू सेट करेंगे। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आप पहले न्यू अकाउंट, न्यू एम्प्लॉय ऐसे करेंगे। व्हाई? बिकॉज नाउ यू हैव समथिंग जहाँ पे आप एसीसी डॉट अकाउंट का जो जो फील्ड है, राइट, साइट फील्ड हो गया, मेलिंग सिटी, ये देखो ये सारा फील्ड्स जो हमारा अकाउंट के अंदर है। व्हाट आई वाज सेइंग, मेलिंग सिटी, राइट? बिलिंग सिटी, शिपिंग सिटी, कुछ भी, right? So let's say shipping city is equals to Delhi, right? The account is a combination of these primitive data types. तो इसीलिए उसके अंदर आप ऐसे सेट कर सकते हैं। But account by itself you just have to create with new account. Okay? ओके Is this सर। clear to everyone? सर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आया था, इट ऑटोमेटिकली कम्स व्हेनेवर वी ट्राई टू डू समथिंग विद अकाउंट ऑब्जेक्ट। Developer console पे whenever there are applicable things already available वो बता देता है। Sometimes it takes some time, but it does give you like AC dot। अकाउंट के अंदर जो जो फील्ड्स हैं ये सारी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, राइट? Similarly, if I write dot, ये बट ये डेवलपर कंसोल लोड होने में टाइम लगता है, तो अभी जाके लोड। इफ यू सी हियर, these are, you can see all of these are objects, okay? तो ये उसने ऑटोमेटिक सजेस्ट करके वो दे रहा है। तुम कैसे जल्दी हो? See this attempting to retrieve symbols, this is not that fast जो immediately दे दे, but it is supposed to give, okay? Field names, method name आ जाते हैं ना। अब यहाँ पे ऐसे करके हम यहाँ पे कस्टम डेटा टाइप्स भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स हो गया, कस्टम ऑब्जेक्ट्स हो गया, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हो गया, फिर उसके अंदर आप फील्ड वाइज आप वैल्यू सेट करेंगे। आपको पता है आपने फील्ड नंबर बनाई थी तो आप वैल्यू सेट करोगे, ठीक है? आपको पता है आपने वो टेक्स्ट बनाई थी तो आप टेक्स्ट सेट करोगे। तो दैट इज हाउ यू सेट द फील्ड वैल्यू। So that means variables can be not just of the primitive data types, but they can be of complex data types. Is this clear to everyone? Anyone has any questions? Please ask. सर ये न्यू कीवर्ड क्या है सर? आई मीन जस्ट वांटेड टू Hmm? आस्क न्यू कीवर्ड, दिस न्यू कीवर्ड New अकाउंट keyword. इज New या keyword as the name suggests कि मैंने अभी तक इस साइड पे एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है? If I don't write whatever I have written on the right side, what is this? Account AC। ये तो आपका बेस सिंपल डेटा टाइप तो है नहीं,
तो मतलब ये वेरिएबल अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है, ये जस्ट एक मैंने डेटा टाइप मेंशन किया है, बट इसके अंदर आई ऑल्सो हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंट डेटा टाइप, तभी जाके उस ऑब्जेक्ट में फील्ड्स मिलेंगी, वैल्यू सेट कर पाऊंगा, राइट? तो when you are creating a new object, that is when you use the new keyword. कि if think of this, इस लाइन को आप पढ़ेंगे कैसे, ACC नाम का जो अकाउंट टाइप डेटा टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर you create a new object of account type and link it with this variable. Okay, so new is used for creating a new object. Okay. Is this whole part clear? Yes. Anyone, any queries, any questions? No, sir. Fine. Great. अब यहाँ पे डेटा टाइप हमारे पास हुआ, वैल्यू हमने सेट कर दी, राइट? मेथड में इनपुट आएगा, मेथड से आउटपुट जाएगा, ये सब हमने कंफर्म कर लिया. नाउ व्हाट वी नीड इज वी वांट अ वे टू एक्चुअली चेक दिस थिंग. सो लेट मी डू वन थिंग. I'll add, after every line I'll add a system.detail, right? And I print the value. First I'm printing which variable, output is equals to the variable name is output, right? यही same line I'll print multiple times. This is where I'll print output 2, then S1, right? ये मैंने अब class कर दी save. It's saving, it will be saved. Now what I just told you, कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के लिए हमारे पास जो क्लास है उसका हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तभी हम उसके अंदर का फील्ड्स एक्सेस कर सकते हैं, कोड एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो इन दिस केस अगर मुझे एक्चुअली मेथड कॉल करना है, डेमो मेथड, देन व्हाट शुड बी द वे? Class dot method. सॉरी, Class name dot method. ओके, दैट इज अ डिफरेंट ट्रैक. राइट नाउ वी हैव नॉट येट एडेड दैट. राइट नाउ बिकॉज वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे डेमो क्लास, लेट्स से object is equals to new डेमो क्लास. अभी हमने देखा ना ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऐसे बनाना. क्लास इज ऑल्सो डेटा टाइप, एवरी क्लास इज ऑल्सो डेटा टाइप. तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्या वैसे ही बनाएंगे जैसे आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का बनाते हैं. डेमो क्लास ओबीजे ये हमारा बना. नाउ व्हाट वी कैन डू, ओबीजे डॉट टेस्ट डेमो मेथड. नाउ ये कोड क्या चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. एनीवन? ओके, क्यों नहीं चलेगा? पैरामीटर्स भी पास करे इसमें. पैरामीटर. एग्जैक्टली, हमने तो मेथड में डिफाइन किए थे, राइट, कि कुछ इनपुट हैं. तो अगर आपने मेथड में इनपुट डिफाइन किए हैं, देन इट बिकम्स मैंडेटरी कि आप जब भी ये मेथड कॉल कर रहे हैं आपको वो इनपुट्स का वैल्यू देना पड़ेगा. लेट्स से आई हैव डन 1, 2. नाउ व्हाट आई विल डू इज,
I will run this code, and if my code is correct, क्या होना चाहिए पहले? आउटपुट के अंदर वैल्यू होगा इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, which means 1 plus 2 3. देन फिर प्रिंट होगा आउटपुट 2 और उसके अंदर प्रिंट होगा 1 2 3 4. देन जो हमने स्ट्रिंग बनाया वो प्रिंट होगा एंड सो ऑन. So let's check what happens now. हमने जो इनपुट दिए हैं वो प्रॉपर्ली कोड में गए कि waiting to log in. और क्लिक नहीं. राइट, नाउ इफ यू सी हियर, ये मेरा लॉग ओपन हो चुका है जहाँ पे फर्स्ट इज प्रिंटेड व्हाट output, which is 1 plus 2. So output is printed as 3. Then output 2 is 1 2 3 4, and then the string which we just took. Right? Is this clear? Yes, sir. Great. Fine. So since we did actually cover this all these basics today, so what I'll do is I'll provide you a link. Right? ये trailhead का link है. Actually don't go to trailhead. Okay. Trailhead में आप practice करने के लिए जाना. But actually it is better if you go to the documentation. Okay, with Salesforce. Let me just share the documentation. This is the official documentation for Eclipse. So from this documentation, I want you guys to just go through the beginning parts as of now. Okay. Am I clear, guys? Yes, sir. Right. ये जो आर्टिकल है इसके अंदर आप जाके देखेंगे बेसिक जो एपेक्स का इंट्रोडक्शन वाला जो मॉड्यूल्स है वो यहाँ पे है. जैसे कि व्हाट इज एपेक्स, दे विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इंट्रोड्यूसिंग एपेक्स. Then you can go through what are the primitive data types, right? All these things you can ask. Once you go through this documentation, okay, then you will have some more context of what Apex is supposed to be and what is happening. Am I clear? Yes, sir. Sir, I have one question. Can you write static like we usually do in Java to avoid object creation? Yes. You can make something static, but why would you make something static unless there is a need to do it? Static बनाने की अगर जरूरत नहीं है तो क्या आप static बनाएंगे? Okay. Perfect. You can create static, but there is a specific purpose of making something static. अगर वो purpose satisfy नहीं होता तो can you make anything static? Got it. No, right? Right. So there are use cases जहाँ पे static use होता है. You have to make your class static, you can have the method static, right? तो वो उस पर डिपेंड होता है कैसे मेथड कॉल होगा, कैसे कॉल होगा, right? So there is static, but we have not yet covered how it is used and why it should be used and where it should not be used. Okay. Does that answer your question?
Yes, sir. Got it. Oh, great, great. So for today, I know यहाँ पे कुछ चीजें अभी आपको एकदम समझ नहीं आ रही होगी, कुछ लोग को ऑलरेडी पता है तो उनको मे भी पूरा अभी ऑलरेडी क्लियर हो. सो दैट इज फाइन. जस्ट फॉर दोज फॉर होम ये अभी सीखना इस